हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में हमारा अगला टॉपिक विच इज़ सिंगल सप्लाई ऑपरेशन ऑफ ओपैम्प। सो नॉर्मली इन केस ऑफ डुअल सप्लाई हमारा ओपैम्प का सर्किट कुछ ऐसे दिखता है जहाँ पे हम लोग दो वोल्टेजेस प्रोवाइड करते हैं विच आर वी प्लस एंड वी माइनस। बट इन द केस ऑफ सिंगल सप्लाई हम लोग सिर्फ एक ही वोल्टेज देते हैं विच इज़ वी एस एंड द सेकेंड वोल्टेज इज केप्ट टू ग्राउंडेड और 0 वोल्ट। So that is known as single supply operation of op amp and उसका circuit कुछ ऐसा दिखता है. Now normally in op amp it works with the two power supplies plus V positive and minus V negative. So in single supply operation the op amp uses only one power source plus V and the second one which is the negative voltage it is kept at 0 volts. Now, why it is needed? So many modern devices, battery powered, microcontrollers, and sensors, they only provide one supply voltage. So using a single supply op amp, it makes the circuit more simpler and cheaper. अब बात करें हम लोग about the main problem. So an op amp compares two voltages and amplifies the difference. But with only 0 volt to plus V available, the op amp cannot output the negative voltage. So the signals going below 0 volt cannot be handled directly. So to solve this, we create a fake ground, which is also called as the virtual reference. So example, we have a supply voltage of 5 volt. We will create a reference at 2.5 volts and we will treat 2.5 volt as the zero for the particular signal. So the signal swings properly between 2.5 volt instead of 0 volt. अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द सर्किट स्टेबिलिटी ऑफ ओपैम्प। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में जितनी भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे वो मेजॉरिटी कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट में कवर होती हैं। सो दिस इज़ ओनली फॉर थ्योरी पर्पस एंड बाय चांस अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है सो यू जस्ट हैव टू राइट द थ्योरी as it is. So a group of circuit connected together as a system is said to be stable if output reach a fixed value in a finite time and the circuit system is said to be unstable if the output increases with the time. अब इसी चीज़ के लिए the common method that are normally used are the Routh-Hurwitz criteria and for the graphic method we use the board plots. अब यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है to show the feedback signal. So from here we can find the open loop gain of op amp, which is a complex quantity and a function of frequency, which we are going to represent by AOL. So AOL is equal to V naught by Vn if the value of Vf is equal to 0. अगर हम लोग बात करें about the closed loop voltage gain which is AF, so that is going to be equal to V naught by Vn and इस particular circuit से हम लोग AF की value निकाल सकते हैं which is AOL divided by 1 plus AOL into beta where beta is the transfer function. अब सिस्टम की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं. So the first one is we have to determine the phase angle and when the magnitude of AOL into beta is 0 decibel or 1, if the phase angle is greater than minus 180 degree, the system is set as stable. Some system magnitude may never be 0 decibel. अब हमारा दूसरा मेथड होता है to determine the magnitude of AOL into beta when the phase angle is minus 180 degree. अगर magnitude is negative decibels, the system is stable. But some systems may never reach minus 180 degree. So that was all for this video and इसी के साथ हमारा Analog Electronics 2 का Unit 1 भी ख़त्म होता है. So from next video we are going to start the Unit